हेलो 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 हेलो। सो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही होगी शायद, क्योंकि मैं मेरे यूजुअल सेटअप पे नहीं हूँ। सो देखते हैं आज हमारा हम क्या करने वाले हैं। इसको बंद कर देते हैं एंड सबसे पहले PHP लर्न करते हैं फॉर बेसिक सोर्स कोड। आई वांट टू लर्न बेसिक PHP so I can review source code and I can also find vulnerabilities. To get started with basic PHP and reviewing source code and finding vulnerabilities, you need to understand the fundamental concept of the language. PHP is a server-side scripting language primarily used for web development. Here's the structured approach to learning it. Core PHP हमारा आ गया syntax, variables, data types, and strings, integer, float, boolean, array, object, operator, control structure, function and arrays, then PHP web interaction. Once you have a grasp of fundamentals, you will start looking for common vulnerabilities. SQL injection occurs when user input is directly inserted into an SQL query without proper synchronization. An attacker can manipulate the query to access, modify, or delete data from the database. Okay, let me start the clock. Back. इसको करते हैं 50 मिनट की। 0 एंड हो गया हमारा 50। सेव, कैंसिल, डन, कैंसिल अगेन, स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम अपना खोल लेते हैं PHP लर्न। W3 स्पूल्स आ गया अपना ये रहा। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो हमारा बेसिक सिंटैक्स आएगा PHP and PHP code goes here. Okay, obsidian, ये अपना ऑथेंटिकेशन आ गया, इसको करते हैं बंद। ये भी शीट आ गई। ये लिंक ऑथेंटिकेशन और चीट शीट इसके अंदर आएगी। वेलकम, एक नया फोल्डर बनाते हैं नेम्ड एज PHP, या फिर एक और नया फोल्डर बनाते हैं नेम्ड एज वेब हैकिंग ऑथेंटिकेशन चीट शीट, या फिर एक काम करते हैं कोडिंग, जिसके अंदर हमारी PHP आ जाएगी। एंड PHP के अंदर एक फाइल बनाते हैं रीनेम PHP learn learning PHP hash बेसिक सिंटैक्स हमारा आ गया।
When a PHP script can be placed anywhere in the document. Oh, not with this. How the you doing this below? Okay, a single stop. Okay, learning PHP basic syntax. Either just behind it, cross. Okay, एक क्रॉस यहाँ पे हमें कम करना है नाइस स्टार a PHP script can be placed anywhere in the document. The default file extension for PHP extensions आ गए हमारे engineering list for PHP extensions. Drive etc infrastructure dot पहला आ गया हमारा डॉट PHP सेकेंड आ गया PHP 5 HTML HTML INC okay I think that's it. The default extension for PHP is PHP. PHP file normally contains HTML tag and some PHP scripting code. Below we have an example of sample PHP file with a PHP script that uses a built-in PHP function echo to output a text hello world on a web page. Basic PHP code. One, two, three, four. One, two, three, four.
और ट्रांसफर. ओके गुड. आई थिंक मैंने इसे कॉपी करा इसलिए दिक्कत आई थी. एनीवे ट्राई इट योरसेल्फ. क्वेश्चन मार्क पीएचपी. ओके स्पेस नहीं आएगा. कंटिन्यूसी स्पेस नहीं आएगा. फैप एको. हेलो. एंड क्वेश्चन मार्क इंक्लूड्स रन. ओके आ गया. PHP case sensitivity in PHP keywords. Example, if, else, while, echo. Classes function and user-defined functions are not case sensitive. And user-defined functions are not case sensitive. In this video example, all three echo statements are equal and legal. Okay, PHP knows PHP is not case sensitive. Are not case sensitive, but it is we to check that and ये remove होगा अपना. Look at the below example. Only first statement will display the value of color variable. This is because color, color, and color are treated as three different variables. Or PHP scripts end with this. Next, insert missing part, echo, question mark, PHP, select here only, question mark, PHP, answer. Okay, ऐसे PHP देखें. Okay. दो बताना. ऐसे PHP, ऐसे PHP. Okay, question mark. Now submit. Next. Single line PHP commit can be written using two different PHP single line commit it can into different. Insert the correct character to write multi-line comment. जब यही था बस मेरा वो आगे तो पीछे था. ऐसे ऐसे
Then I simply say submit. Statements in PHP have to end with special character. Which one? Submit. कमेंट्स हो गए वेरिएबल कर लेते हैं अब creating a declaring PHP variables. In PHP, a variable starts with followed by the name of variable. Variables start example would be this. In the example above, the $x will hold the value of 5 and variable $y will hold the value John. Note when you assign a text to a variable, put quotes around the variable. Unlike other programming language, PHP has no command for declaring a variable. It is created the moment you first assign value to it. Think of variable as container for storing data. PHP variables. A variable can have a short name or a more deceptive name like age, can be total volume. Rules for PHP variables. Rules. A variable starts with sign followed by name of the variable. A variable name must be start with a letter or underscore character. A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Variable name are case sensitive. Remember that PHP variable names are case sensitive. Output variables, the PHP echo statement is often used as output data to screen. The following example will show you how to output text in a variable. $text is equal to W3 schools. Echo I love $txt. Try it yourself. $t text is equal to echo dollar text run. Okay, $txt. I if I run this now, then okay only high एक आउटपुट हो रहा है हमारे यहाँ पे echo text is equal to W3. If I run this, I love W3 schools. What it $txt txt run.
dollar text is equal to I. This is example, close it and echo and example is dollar txt run. Okay, error. Now run. तो अब जाता है जितना मुझे लग रहा है ठीक है भाई। ओके 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 ये नहीं लगा। नाउ रन। ओके इट शुड एटलीस्ट टेल मी। इसको कम से कम बताना चाहिए यार कि एक कोड नहीं लग रखा। कोई बात नहीं। The following example will produce same output as example above. X, Y is equal to echo. Okay. PHP is a loosely typed language. In the above example, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically associates the data type to the variable depending on its value. Since the data type are not set in strict string, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. In PHP 7, type declaration were added. This gives an option to specify the data type expected when declaring a function, and by enabling the strict requirement, it will throw a fatal error on type mismatch. You will learn more about strict and non-strict requirement and data type declaration in PHP chapter. Variable types. PHP has no command for declaring a variable, and data type depend on the value of variable. PHP supports get the type. To get the data type of a variable, use var function. Function return data type of the data type and the value. To get data type of a variable, use var. Okay. Assign string to a variable. Assigning multiple values. You can assign same value to a multiple variable in one line. X is equal to Y is equal to Z is equal to fruit. Submit answer, which is not legal PHP variable name. As far as my experience, this shouldn't create a variable named txt, dollar sign txt, and is equal to hello. Submit will not run. Isn't it dollar txt? Then it should be hello. H okay, H capital आएगा. H capital. Submit correct answer. Next, create one variable named X and the other variable named Y. Sugar.
Then use echo statement to output the sum of x and y. Create one variable named x, yani $x, then $y, then echo $x and $y. Submit correct answer. Variable scopes. PHP variable scope. In PHP, variable can be declared anywhere in the script. The scope of a variable is a part of a script where variable can be referenced and used. PHP has three different variable scopes: global and local scope. A local variable declared outside a function has global scope and can only be accessed outside of a function. X is equal to 5. Function my test echo %p variable x inside function is $x. My test, write yourself. Okay, inside में नहीं होगा, outside में आ जाएगा. A variable declared is then a function has local scope and can only be accessed within that function. Okay. Copy paste. PHP the global keyword. The global keyword is used to access a global variable from within a function. The shift, control shift, the global global. PHP also store all global variables in an array called global index. The index holds the name of variable. This array is also accessible from the within function and can be used to update global variable directly. The example above can be rewritten like this. PHP the static keyword. Normally when a function is completed, executed, all of its variables are deleted. However, sometimes we want local variable not to be deleted. We need it for a further job. To do this, use static variable, static x, echo x plus plus.
static keyword after if you want to use the variable even its after its execution has ended. ओके ये हो गया वेरिएबल्स हो गए डेटा टाइप्स हमारे हो गए डेटा टाइप्स कर लेते हैं PHP data types. Variable can be stored. Variable can store data of different types and its different type can do different things. PHP supports the following data types: string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. PHP string. A PHP string is a sequence of characters like hello world. String मेरे को पता है integer. An integer must have at least one digit. An integer must not have a decimal point. An integer can be positive, negative. Integers can be specified in decimal, hexadecimal, binary, octal, PHP float, Boolean array. An array stores multiple values in one single variable. In the following example, class is an array. PHP object classes and objects are the two main aspects of object-oriented programming. A class is a template for object, and an object is an instance of class. When the individual objects are created, they inherit all the properties and behavior from the class, but each object will have different value from the property. Let's assume we have a class named car, and that can have property like model, color, etc. We can define variable like model, color, and so on to hold on to these properties. When the individual object like Volvo, BMW, Toyota, etc. are created, they inherit all properties and behaviors from the class, but each object will have different value for the property. If you create a construct function, PHP will automatically call this function when you have an object from the class. Objects. एग्जाम्पल कॉपी करते हैं एग्जाम्पल हमारा ये हो गया PHP null value class का public color public model public function construct करा हमने model color and model this color is equal to color and this model. Don't worry if you do not understand PHP object syntax, you will learn more about that in PHP classes and object chapter. PHP null value. Null is a special data type which have only one value null, a character, a variable of data type. Null is a variable that has no value assigned to it. If a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. Variables can also variable can be emptied by setting the value to null. Change data type.
If you assign an integer value to a variable, the data type automatically becomes an integer. If you assign a string to same variable, the type will change to a string. If you want to date, if you want to change the data type to an existing variable, but not change the value, you can use typecast. You can use casting. Casting allow you to change data type on variable. एक मिनट हो गए. ये अब यहाँ पे चलते हैं. Get space, get certified courses, PHP. ओके, तो ये बाय का नहीं, ये नहीं चाहिए हमें. सर्च PHP, WP schools, PHP. फिर आप PHP ट्यूटोरियल, इंट्रो, सिंटैक्स हमारा हो गया था. कमेंट हमारे हो गए थे. वेरिएबल्स पे चलते हैं. वेरिएबल हो गया था. वेरिएबल स्कोप हो गया था. एको प्रिंट हमने नहीं करा. डेटा टाइप्स पे चलते हैं. डेटा टाइप्स हमारा हो गया. PHP स्ट्रिंग, या फिर आज के लिए PHP इतना ही करते हैं. इसको करते हैं पॉज और लेते हैं स्टार्ट. नोटपैड.
अब XXE की सिक्योर डिसरिलेशन एंड JWT करना है। तो सबसे पहले JWT कर लेते हैं एंड फिर XXE करेंगे। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको फिलहाल सेव करते हैं और बंद करते हैं। एंड इसको डाल देते हैं हम PHP में। इसको बंद करते हैं वेब हैकिंग ऑथेंटिकेशन। नया फोल्डर बनाते हैं JWTs। इसको वेब हैकिंग में डाल देंगे। ब्लॉक बंद कर देते हैं। ओरेकल। एक अपडेटेड अपडेटेड वर्जन स्टार्ट। इसको स्टार्ट होने देते हैं। मीन बाय हैक में तो मेरा चलेगा नहीं क्योंकि मेरा फोन खराब हो चुका है और उधर मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा जिसमें 2FA ऑन है। सो देयर नो वे आई कैन गेट 2FA कोड राइट नाउ। तो फोर्स से वैसे करना पड़ेगा JWT, वरना मैं सोच रहा था ट्राई हैकिंग वैसे करूंगा, पर कोई बात नहीं। इसको बंद कर लेते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। ओके, लॉग इन करते हैं। अपना ब्राउजर खोलेंगे। portswigger.net खोल लेते हैं। मेरा प्रोक्सी बंद होना चाहिए उसको। हाँ, बंद है। JWT vulnerability। और कोई सोर्स देख लेते हैं पोर्ट्सविगर के अलावा। ऊपर 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 ऊपर। अटैक्स एंड वर्निबिलिटी ये देख लेते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप एक ये देख लेंगे। ये नहीं चाहिए। बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अल्टीमेट गाइड टू JWT देख लेंगे। स्टिंग देख सकते और बस ये देख लेंगे, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फुल गेम। ओके, तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे नेम्ड एज JWTs and JWTs format। कॉपी
Our payload contain information claim about the entity users going to verify by application. ये रहा हमारा कॉपी करते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसको बड़ा करते हैं दोबारा। और JSON web token consists of a header, payload, signature in base64 URL encoding separated by dots. Let's take apart the real token. The header contains metadata about the token, such as algorithm used for the signature and the type of token, which is simply JWT. For example, the header before encoding is algorithm type JWT. The payload contains information about the entity that is going to be verified by application. Our sample token include the following claims: name, username is admin. Finally, to generate the signature, we have to apply base64 URL encoding to header, dot, and payload, and then sign the whole thing as a secret or private key, depending on the algorithm specified in header. Common JWTs, vulnerability. JSON Web Token were designed to be flexible and future-proof, leaving a ton room for adaptation to a variety of use cases and requirement, but also a lot of room for mistake in implementation and use. Here are some typical vulnerabilities that can be introduced when working with JWT: failing to verify the signature, many JWT library provide one method to decode the token and another to verify it. Decode only decodes tap, over the tap, 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 tap. Nice. Tap, tap. Sometimes developers might mix up these methods in case signature is never verified and the application will accept any token in a valid format. Developer might also disable signature verification for testing and then forgot to enable it. For example, let's say we have the following token, but it is never verified. Okay, allowing the none algorithm. अपना second हो गया allowing the that algorithm. So what's up? Okay, nice. And control Z, Z.
allowing the none algorithm. The JWT standard accepts many different algorithms to generate a signature. Why it is auto resizing? In code and sign, the token will look like this. The none algorithm specifies that the token is not signed. If algorithm is permitted, then we can bypass signature checking by changing an existing algorithm to none and stripping the signature. Let's start with our expected token. Encode and sign. This token will look like this. Signature in bold. If none algorithm is permitted, if none algorithm is permitted as the algorithm value, an attacker can simply use it and replace the valid algorithm, then get rid of the signature. So now unsigned, the modified token will accept by the application. Algorithm confusion. Another hash. When an application uses asymmetric encryption, it can openly publish its public key and keep the private key secret. This allows the application to sign the token using its private key, and anyone can verify this using its public key. The algorithm confusion between arises when an application does not check whether the algorithm of the received token matches its expected algorithm. In many JWT library, the method to verify signature is verify token secret, verify token public key. Unfortunately, in some library, the method itself does not check whether the received token is signed using the application expected algorithm. If public key is accessible with the application, an attacker can forge malicious token by changing the algorithm of the token to HMAC, tampering with the payload to get desired outcome, signing the malicious token with the public key found in the application, sending the JWT back to application. Using trivial secrets. Asymmetrically, a cryptographic signature is only strong as a secret used. If his application uses script weak secrets, the attacker can simply brute force it by trying different values until the original signature matches the forged one. Attack against JWT, kid parameter injection. Attacking against JWTs, kid parameter injection. The JWT header can contain the key ID parameter kid. It is often used to retrieve the keystring from a database or file system. The application verifies the signature using the key obtained through the kid parameter. If the parameter is injectable, it can open the way to signature, bypass, or even attacks such as RCE, SQL, LFI. To see in action, let's start with the following valid token. The kid parameter value is vulnerable to command injection. The following modification might lead to remote code execution.
Kid parameter plus directory travel is equal to signature bypass. If application uses kid parameter to retrieve the key from the file system, it might be vulnerable to directory traversal. Then an attacker can force the application to use file whose value the attacker can predict as a key for verification. This can be done using any static file within the application. Knowing the key file value, the attacker can craft malicious token and sign it using the known key. Continuing with the previous JWT example, an attacker might try to insert dev null as the key source to force the application to use an empty key. If directory travel succeeded, then attacker will able to sign malicious token using an empty string. Kid parameter injection plus SQL injection is equal to signature bypass. If an application uses kid parameter to retrieve the key from a database, it might be vulnerable to SQL. SQL. If successful, an attacker can control the value returned to the kid parameter from an SQL query and use it to sign malicious token. Again, using the same example token, let's say that the application uses the following vulnerable SQL query to get JWT key via a kid parameter. Select key from keys where key ID is equal to key 1. An attacker can then inject a union select statement into kid parameter to control the key value. X key value union select. If injection succeeds, the application will use the following query to retrieve signature key. The query returns a into kid parameter, allowing the attacker to sign a malicious token simply with AAA. To avoid these and other injection, application should always synthesize the value of kid parameter before using it. Controlling time. ये रहा kid parameter. Paste. Nice. ऊपर गिरा. Attacking using JKU header. In the JWT header, developer can also use JKU parameter to specify JSON web key set URL. This parameter indicates where the application can find JSON web key used to verify signature, basically public key in JSON format. To illustrate this, let's take the following JWT that uses JKU parameter to specify the public key. JKU example key.json. The specified key.json file might look something like RSA. The application verifies the signature using the JSON web key retrieved based on JQ header value. Scenario 1. For no attacker, for the attacker, an application can change the JQ parameter value to the point where their own an attacker can change the JQ parameter value to point to their own JWK instead of the valid one. If accepted, this allows the attacker to sign malicious web token using their own private key after the malicious token is sent. Scenario 2. पहले सिनेरियो 1 की इमेज देख लेते हैं. रिक्वेस्ट करा JWT से पैरा प्रेस किया JWT extract JQ header fetch करा praise verify response request praise fetching malicious JWK based on JKU header praising verifying response. To prevent such attacks, application typically use URL filtering
Unfortunately, there are ways for attacker to bypass filtering, such as using HTTPS trusted application checks URL starting with trusted, using URL fragment with hashtag, using DNS naming hierarchy, changing with open redirect, chaining with header injection, chaining with SSRF. ओके और छोटा करना पड़ेगा इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे राइट पेस्ट किया सिनेरियो वन आ गया सिनेरियो टू आ गया नाइस एंड समरी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे बस सेव vital part of authentication process in ninth इसको करते हैं अपन deny all the header is a base 64 हमें पता है JWA JWT specification support multiple algorithm defined in JWA symmetric अब लैप्स करते हैं short summary how to test algorithm description payload signature review अब 15 मिनट में करेंगे
Good girl. Mama, I will miss my cozy bed. Good night, guys. Hello everyone, welcome back to our channel Growers here and here we are with another vlog. So guys, आज का जो हमारा vlog है, अभी ना राज के इंस्टा पे 2 मिलियन हुए थे, तो तब से मैं सोच रही थी कि कुछ व्लॉग ना उसके ऊपर बनाऊं, उसकी मजाक उड़ाने के ऊपर या कुछ उसकी लाइफ के बारे में या कुछ भी इस तरीके का व्लॉग। देन बहुत ऐसा मतलब ये चीज बहुत होती है कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं ना, वो राज को बहुत अलग सोचते होते हैं, बहुत शाय है एक्चुअल में। जब वो लोगों से मिलता है ही इज वेरी शाय, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है दूर से कि वो बहुत मतलब शरारती होगा या हरकतें सी करता होगा, मतलब करता है वो भी करता है, बट एक्चुअली में उसकी नेचर बहुत अलग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें आई विल शो यू राज फॉर अ फुल डे कि वो पूरे दिन में क्या क्या करता है। बेसिकली आई विल बी स्पाइंग ऑन हिम। बहुत खुद को वो स्पाई बुलाता है ना, दैट यू विल थिंक दैट आई एम स्पाइंग ऑन यू, इस तरीके का। तो आज मैंने सोचा कि मैं स्पायर के ऊपर स्पाई करती हूँ। तो अभी हो रही है सुबह, अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी शायद रात सो के भी नहीं उठा है, तो सबसे पहले से उठाती हूँ। पहले तो आदब जा, जिम नहीं जाना? तेरा अलार्म बोल रहा था तब से, तो उठ ही नहीं रहा। रखा तो है तेरे पास। सुबह सुबह ये हाल होता है शहर का। कहीं राख है तो कोई दुआ पता नहीं क्यों जाना होता है इतनी सुबह इतनी सर्दी में जिम। पता नहीं, वही चीज हमेशा ना जिंदगी में वही चीज अच्छी होती है जो बुरी लग रही होती है। मतलब मैगी अच्छी लगती है खाने में तो लोग बोलते हैं मैगी बुरी है, तब बैंगन भरता बेकार लगता है वो अच्छा होता है। ये देखो, ये क्यूट है। तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। माधव अलग जिम जाता है, मैं और मम्मी अलग जिम जाते हैं। बाय द वे, वेलकम टू माय कार। Yes, this is इनकी कार कर्व। पहले मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही इसके जिम चली जाऊँ, क्योंकि मुझे इस पर स्पाई करना है, बट मेरा अपना जिम छूट जाएगा और मेरे को पतला होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो तुम लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं, मतलब जस्ट क्लियरिंग दैट। मान के चलो। तो हम आ गए जिम से। देखिए राज भाई का क्या हाल है। नहा लिया तू? और क्या, लग तो नहीं रहा नहाया हुआ। एटलीस्ट इंसान को लगना तो चाहिए कि वो नहा लिया। क्या करता हूँ मैं, नहाने से पहले जो कपड़े पहने होते हैं 5-6 दिन के, वही पहन लेता हूँ नहा के भी। साले। और फेस देख कैसा कर रखा है अपना। साफ है। मतलब यार सर्दियों में तो कम से कम एक क्रीम तो लगा लिया कर, कम से कम कुछ तो, मतलब मुंह धोया था। फेस वॉश से धोता हुआ है। और क्रीम कौन सी लगाई? रखी है अंदर एक। अबे वहाँ फुट क्रीम रखी थी मम्मी की। अरे भाई ये क्या जरूरत है, मेरा फेस अच्छा लग रहा यार तो अच्छा लग रहा था, इसका मतलब कुछ भी ना लगाओ। मतलब इतनी फटी हुई स्किन हो रखी है कि ऐसा लगता है कहीं अगर झाड़ दिया ना तो स्नोफॉल हो जाएगा। मेरे को ना इतनी बेइज्जती के लिए ना इस ब्लॉग में लिया मत करो। मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मेरी बहुत तारीफें आती है कमेंट सेक्शन में, गाइस तारीफ कर दो। तूने पूछ ही लिया कि क्या लगाना चाहिए, तो मेरे से सुन ले फिर, ठीक है? एक तो मेरे ब्लॉग्स देख लिया कर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐप के बारे में बताया था, क्योर स्किन ऐप। ये मैंने बनाया था वो, ठीक है ना, सामने से मैं ही शूट कर रहा था। तो याद क्यों नहीं है तुझे? देख सुन, Audience क्योर के- स्किन ऐप पे जा। अच्छा, वहाँ पे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ना तुझे कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है। परफेक्ट। तो वो आपको डिस्काउंट चाहिए हो क्योंकि आप मेरी वीडियो से जा रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आई हूँ। यूज कूपन कोड GROWER100 एंड गेट 100 रुपीज ऑफ ऑन योर फर्स्ट किट। मुझे मिला? ऑब्वियसली तुझे ही मिलेगा, तू तो ग्रोवर ही है। ओह लेट्स गो। तो आज अपनी किट ऑर्डर कर दे प्लीज, मेरे से ये सब देखा नहीं जाता। ओहो। College students get free Gemini upgrade for 1 year. ये है राज ग्रोवर के नाश्ते का टाइम। किसी को शांति से खाने में मत दो है। मैं वही फोटोग्राफर हूँ जो शादियों में आके और तुम्हारे खाने में डिस्टर्ब करते हैं। तो राज आप क्या खा रहे हैं आज? मैं गोभी का पराठा खा रहा हूँ। मलाई। हफ्ते में 8 दिन पराठे खाता हूँ सुबह, क्योंकि हाँ। मैं पंजाबी हूँ। हफ्ते में 8 दिन का मतलब ये है कि कभी कभी शाम में भी खा लेता है। हाँ। इस हिसाब से तो 12-15 बार हो जाता होगा माधव वैसे। राज ग्रोवर loves to eat पराठास। और क्या, मलाई दे दो, मक्खन दे दो। इसको पराठे के अंदर भी मक्खन चाहिए, पराठे के ऊपर भी मक्खन चाहिए और पराठा घी में सिका हुआ चाहिए। हाँ, और चाय भी मतलब पी लेता हूँ। मतलब मैं ऐसा हूँ थोड़ा सा कि मैं सब कुछ पी लेता हूँ। पता है दुनिया में बच्चे ऐसे होते हैं ना, चाय नहीं पीते, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ, मैं सिर्फ ये ना, वैसे कुछ भी ला दो मैं। Very good। कोल्ड कॉफी दे दोगे इसके बाद वही पी लूंगा मैं। बन रहे हैं पराठे सुबह 12:15 बजे। नहीं बिल्कुल। राज भाई इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिज नाना। नाना जी का कॉल ये कभी मिस नहीं करते हैं। हाँ, मिस तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं और करते। क्या करते हैं ना, एक बारी को मेरा मम्मी का पापा का दो व्लॉग में।
हेलो। मम्मी बैठ के चाय पी रही है एंड शी इज वेटिंग कि ये कब फ्री होगा और मम्मी इसके साथ वीडियो बनाएंगी। आज लॉन्ग वीडियो शुरू करनी है भाई। हाँ बहुत बर्डन होता है हमारे सिर पे। यस यस यस। राज भाई आज परेशान हो गए हैं, सुबह से कैमरा पीछे पीछे लगा हुआ है इनके। अभी तक तो ये लेकिन अपना आइडियल जीवन जी रहे हैं, अभी तक तो दिन का ही अपना आइडियल जीवन जी रहे हैं। अभी जब शाम तक और रात तक ये जाएंगे तो इनकी कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगी कि ये कैसे है एक्चुअल में। क्यों मतलब मैं ऐसा क्या करता हूँ? या तू घंटों घंटों गेम खेलेगा, घंटों घंटों पड़ा रहेगा। आज ना थोड़ा सा गलत दिन चुना है तुमने, मेरा सारा काम का दिन है आज। अरे सिर्फ 4 यार घंटे काम शिट, करने। तब भी माधव तुझे अनफिल्टर्ड पकड़ ही लेंगे हम कहीं ना नहीं कहीं। लेकिन हाँ, तुम लोगों को हमारी लड़ाई देखने का मौका तो मिल ही सकता है। अरे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी जो एकदम रॉ नेचुरल जो बिग बॉस में वो करते हैं ना, वो फोकस करते हैं यार। अच्छा इधर लड़ाई हो रही है, चलो यहाँ चलते हैं। 1 घंटे से शूटिंग चल रही थी, अब मम्मी थक चुकी है। हमारी कैमरामैन कैमरा ड्यूटी पे मुझको लगा दिया गया है। अभी भी पकड़ेगी कैमरा। लेकिन राज भाई कांस्टेंट मेहनत देख रहे हो आप लड़के की, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए हैं, थकान हो चुकी है पूरी तरह, लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। ऐसे ही थोड़ी मेहनत कर, पसीना बहा, थकना और रुकना है मना। तो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और एक रोल में प्रेस करनी है गाइस। वैसे मुझे प्रेस करनी आती नहीं है, लेकिन मैं रोल में पूरी एक्टिंग कैसे करूँ ऐसा बहुत ही बढ़िया प्रेस करता हूँ। कर हरकतें जो कर रहा था अभी करना, अब कर, गा गाने गा, रोटी गिरा, रोटी का एरोप्लेन बना। बिग बॉस मुझे आउट हो रहा है। बिग बॉस लंच के बाद विदाउट एनी ब्रेक दोबारा से वीडियो पे चालू राज रोवर। इतना काम करते नहीं है नॉर्मली ये, पर आज जाने क्या हो गया है इस घर में। ये देखो मम्मी कंबल प्रेस कर रही और स्विच आउट है। स्विच आउट है। करेगा तू? तो 50 दूंगी इसका। मैं 50 नहीं, इसके ऊपर एक पैसे दे दूंगी। जिद्दी हो रहा है। ज्यादा जिद्दी हो रहा है। ये देखिए स्वेटर सूट। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब ये अपना पूरा आपा खो चुका है। अब ये भूल जा रहा है बार बार कि वीडियो बन रही है, तो ये एक्टिंग नहीं कर पा रहा बेकार की। करना क्या कर रहा था? ये जो गुस्सा करने वाला होता है ना, जैसे तू कैमरा लाती है मैं कुछ शर्मा नहीं रहा। शर्मा नहीं रहा, लेकिन तू अपना वो गंदा रूप दिखा नहीं सकता ना। कौन सा गंदा रूप? 1 घंटे से कह रहा हूँ वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। झूठा। आप पौना घंटा टॉयलेट में लगा के आया, पौना घंटा तो अपनी गेम सीट पे बैठा। गेम सीट पे पौना घंटा। मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताऊंगा, गवाही मैं दूंगा। मैंने इन्हें आधा घंटा उठाया, पहले उठ जाओ वीडियो बना लो, फिर उठ के बाहर आई। उन्होंने बोला चाय पीऊंगी, चाय पी आपने, मैंने 5 मिनट के लिए। तूने तो बना के नहीं दी। 5 मिनट तूने दी बना के, तू बना के देता। 5 मिनट के लिए अंदर बैठा था, उसमें इनको ऐसा हो गया कि तू तो अंदर बैठा था, इसलिए नहीं बनी वीडियो। आ रहा हूं, रुक जाओ। क्या है पापा का रोल? पापा को मम्मी के पीछे खड़े होकर पहले मुंडी हिलानी है, उसके बाद एक्टिव अंदर करने के लिए बोलना है बस। पापा बहुत तैयार होके आए हैं आज। ये सारा रोल अपनी माँ के लिए लिखता है, उसी के साथ लिखता है और मुझे ऐसे जरा जरा से रोल देता है। और ये इनसिक्योर हो चुका है मेरे से, मैं इतना बड़ा कलाकार। पापा ना तो थिएटर कर बोल चुके रहे हैं यार। ब्लॉग में, लेकिन ये बात सच है, पापा तो बहुत इनसिक्योर रहता हूँ मैं। पापा थिएटर कर चुके हैं ना, तेरे को एक्टिंग स्किल्स में डर लगता है पापा से। और इन्हें उठा के ले गए मेरी जगह तो बॉलीवुड वाले। हमें तो आपके पापा चाहिए। नहीं, सीधे हॉलीवुड से आएगा मेरा बुलावा तो आप ही की पूरी गलती। ये देखो बाहर से आवाजें लग रही हैं। अभी कैसे कैसे गालियां दे रहा था, मम्मी 7:30 बजे गेट पे लेट जाऊंगा, ये कर लूंगा। ये लोग रेडी होते आधा घंटा लगा जाते रेडी होने में, मैं फिर यहाँ ढीठ बन के आ बैठ जाता हूँ। मैं भी कर लूंगा अपना। डीट बनना नहीं पड़ता तुझे, वो तो तेरे जीन्स में है बेटे। तू अगर तैयार होने जाए और मैं जाके और जो है ना ऊपर कुछ करने लग जाऊं, फिर पेड्रो पोरो। तो काम के बीच में, काम से पहले, काम के बाद, काम के ऊपर, काम के नीचे, राज भाई डज दिस। ये जिंदगी है इसकी। ऐसा नहीं है। तुम राज भाई को 4 गाली देके अगर इस कुर्सी पे बिठा दोगे तो भी ही विल क्राई एंड प्ले, है ना माधव? ये सच है ना? अच्छा ये सच है ना? गेम्स कैन मेक यू फॉरगेट एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग बट मतलब टेम्परेली आउट हो जाता हूँ मैं चीजों से। एक मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ आज, बहुत अंदर की। वो बात ये है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मम्मी मैं तो चल इतनी काउंट में नहीं आती, बट मम्मी पापा स्पेशली, तो वो राज का सबसे ज्यादा फन का टाइम होता है। मतलब जो वीडियोस ये बनाता है ना, वो फुल रिलेटेबल है। इसको दिल से इतनी राहत मिलती है कि वाओ आई एम ऑन माई ओन, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये गेम खेलता है, जो भी करता है, फोन पे बात करता है, पता नहीं क्या करता है, बट ये बहुत खुश होता है हमारे जाने से। ऐसा कुछ नहीं है। सच बता दे। अच्छा नहीं ऐसी बात। सच ऐसी बात।
तो अब इसका वो खुशी का टाइम शुरू होने वाला है क्योंकि मम्मी पापा और मैं जा रहे हैं बाहर और मैं इसको आई विल कैच हिम रेड हैंडेड टुडे। जब मैं आऊंगी तो मैं देखूंगी ये क्या करता है बेचारा। डन 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 मैन। अभी इसका बाहर का खाना बंद करा हुआ है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हद हो चुकी थी। पापा इसको मैदे का बॉल बुलाते हैं इसीलिए, तो अभी इसका बाहर का खाना बंद कर रखा है, नहीं तो पीछे से ऑर्डर भी होता ही होता है। राज भाई कॉट रेड हैंडेड टॉकिंग टू समवन ऑन फोन। हाँ भाई कौन है दिखाओ, आज तुझे दिखा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। शुरू करते हैं दोबारा। मशीन में लॉग इन कर लेता हूँ मैं। और लैब्स पे चलते हैं यहाँ पे। एंड हमारा JWT के टॉपिक पे चलते हैं। बिजनेस लॉजिक वाइनेबिलिटी। ऑथेंटिकेशन कमांड, फाइल अपलोड, रेस कंडीशन, API, ऐसे सारे वेब पेज, क्लाइंट साइड, वेब सॉकेट, CORS, डॉग बेस्ड, मेरा JWT अटैक्स, व्हाट आर जेसन, व्हाट आर JWT हमारा हो गया। व्यू ऑल JWT लैब्स, JWT फॉर्मेट हो गया, सिग्नेचर हो गया। The JWT specification is actually very limited. It only defines the format for representing information claims as a JSON object that can be transferred between two parties. In practice, JWTs aren't really used as a standalone entity. JWTs specific extend both JSON web signature and JSON web encryption. Note for simplicity throughout these materials, JWT are refers primarily to JWS tokens, although some vulnerabilities described may also apply to JW token. What are JWT attacks? JWT attack involves a user sending modified JWT to the server in order to achieve a malicious goal. Typically, this goal is to bypass authentication and access control by impersonating another user who has already been authenticated. What is the impact of JWT? समरी से पहले हम लगाएंगे यहाँ पे another hashtag and इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। How do vulnerabilities to JWT attack arise? JWT vulnerability typically arises due to flawed desktop है मेरा, ठीक है आंसर। Handling within the application itself, the various specifications related to JWT are relatively flexible by design, allowing website developer to decide many implementation detail themselves. This can result in them accidentally introducing vulnerabilities even when using better hardened libraries. These implementation flaws usually mean that the signature of JWT is not very verified properly.
This enables an attacker to tamper with the values passed to the application via tokens payload, even if the signature is robustly verified. Whether it can truly be trusted lies heavily on server secret, key remaining a secret. Editing JWTs. Using the JWT, right click on the request and send it to repeater. ओके, इसको देख लेंगे करते टाइम। पहली लैब कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सेस करते हैं लैब। टर्मिनल खोल रहा हूँ मैं। cd opt workspace sudo java tally next start। इसको करते हैं बंद। JWT एडिटर पे चलते हैं। टोकन्स कॉन्फ़िग प्लीज ये हटाओ। इसको बड़ा कर लेते हैं, प्रोक्सी कर देते हैं। हिस्ट्री। This lab uses JWT based mechanism for handling session due to implementation flaw. The server doesn't verify the signature of any JWT it received. To solve the lab, modify our session token to gain access to JWT, access to admin panel at slash admin, then delete the user Carlos। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं माय अकाउंट पे जाकर। विनिया एंड पीटर लॉगिन। रीलोड कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट देख लेते हैं। रिपीटर। ओके, ये रहा। इसको करते हैं कॉपी। JWT टोकन। टोकन। How do you decode this? यहाँ देखते हैं डिकोड कैसे होगा। ये रहा हमारा टोकन। ओके, अगर मैं एक पर्टिकुलर पाथ सिलेक्ट करूँ, जी दिस टू दिस,
कोड कोड बेस 64। मेरा तो नहीं हो रहा। जैसे मैं इससे एक और डॉट होना चाहिए बीच में। कंट्रोल शिफ्ट और इश्यूज में देखते हैं। प्रिंट स्क्रीन चैट जीपीटी why is not getting decoded. बिजनेस पूरा कॉपी करते हैं इसको। डिकोडर पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। डिकोड एज base 64 base 64। ये रहा तो बीच में एक आ रहा है टेक्स्ट डिकोड। डिकोड एज base 64। What the fuck? तेरा टेक्स्ट काम करते हैं, रिपीटर पे चलते हैं। सबसे पहले इसको इससे कॉपी करते हैं, डिकोडर पे पेस्ट करते हैं। कि CAR Edwards Carlos encode as base 64 repeater send ओके कंट्रोल C करते हैं इसको।
If I request a JWT and you want to investigate further, view JWT content, highlight the section open in turn. Notice that the content is automatically recorded. एक काम करते हैं इसको हटाओ तो इसी पे चलते हैं JS माइनर JWT एडिटर तो फिर यहाँ से टर्बो इंक्लूडर हो सकता है ओके प्रॉक्सी पे चलते हैं आईडी विनियर रिपीटर पे सेंड करते हैं देन रिपीटर पे चलते हैं एक काम करते हैं इस पे चलते हैं और सबसे पहले JWT डिकोडर फर्स्ट ये रहा सेकेंड ये रहा ओके ना चलते हैं URL में डेट 64 ब्रो बट क्यों नहीं हो रहा इसको अगर कॉपी करूँ मैं डिकोडर कंट्रोल A स्मार्ट डिकोड डिकोड एज B64 टेक्स्ट nothing happening bro nothing is happening what the fuck फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
डॉट इधर अपना ये फेक है इस्तेमाल डॉट 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 क्या चलता है ये अपना डॉट स्मार्ट डिकोड तो where the hell is the dot again era dot smart decode bro nothing is happening base 64 you are in decode as base 64 text no picture mark bro पर यहाँ पर सही में चल रहा है काम करते हैं solution लिख get my account submit content your journey send this to the repeater change the path to admin काम करो इसको हटाओ दूसरी लैपटॉप week signing in my account William PETHR login repeater पे यहाँ पे चलते हैं मुझे बहुत में दिक्कत है क्या कोई निशान decoder smart decode decoder base 64 admin ब्रो पर होना तो ये सब चाहिए ना ब्रो व्हाट्सएप एक मिनट
ओके ओके ओके, गॉट इट। सो हमारा पहला इधर आ गया एल्गोरिदम। दोबारा पहली लैब पे चलते हैं। आई काइंड ऑफ फिगर इट आउट, मे बी आई एम रॉन्ग। हु नोस। फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, टर्बो इंट्रूडर सेटिंग्स, कैंसिल, जो भी है। मैं यहाँ जाऊंगा सबसे पहले, पहली पे जाऊंगा इधर, इसको करूंगा क्लोज, एक्सेस करूंगा, डिसेबल है। टू सॉल्व दिस लैब गेन एक्सेस टू एडमिन पैनल देन डिलीट द यूजर कार्लोस। सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा अपने अकाउंट पे, क्योंकि मेरा विनियर लॉगिन है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और सीट लूंगा। मेरा ये डिलीटेड है, प्रोक्सी क्योंकि नहीं। क्लियर कर दूंगा मैं हिस्ट्री, यस। अब रिलोड करूंगा दोबारा। ओके, रिलोड करने के बाद डिसेबल, फिर मैं यहाँ जाऊंगा एंड इसको मैं भेज दूंगा गेट रिक्वेस्ट इस वाली को, टू रिपीटर। एंड रिपीटर में मैं जाऊंगा और फर्स्ट सेक्शन देखूंगा सबसे पहले हमारा, जो कि है दिस किड, जिसपे हमारे एल्गोरिथम्स आ गए। हमें सेकेंड एडिट करना है, तो सेकेंड हमारा जा रहा है यहाँ तक। मेरा सेकेंड विनियर की जगह मैं कर दूंगा एडमिन, एडमिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई चेंजेस एंड गेट स्लैश एडमिन सेड 200। ओके, ये एड्रेस कार्लोस, हमारा एडमिन पैनल आ चुका है। कॉपी करेंगे इसको, एडमिन स्लैश, मैंने एडमिन की कॉपी कर लिया। इसको हटाएंगे, सेंड करेंगे 302। लैब हो जानी चाहिए सॉल्व, एंड लैब सॉल्व हो चुकी है। नाइस 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 नाइस। तो बेसिकली मेरे को पता चल गया मेरे क्या दिक्कत आ रही थी वहां पे। सो दैट्स गुड। यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं क्लियर हमारे इंट्रूडर को। क्लियर कहा गया, क्लियर 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 क्लियर, ये क्लियर, यस, क्लियर, यस, एंड बैक। फर्स्ट लैब सॉल्व, सेकेंड देखते हैं दिया फ्लॉड सिग्नेचर वेरिफिकेशन, uses JWT based mechanism for handling session. The server is insecurely configured to accept unsigned JWT. एक्सेस करते हैं लैब, माय अकाउंट पे चलते हैं। ओके, ऑलरेडी लॉग्ड इन है। यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, इसको रिलोड होने देते हैं, डिसेबल, आईडी भी गया, रिपीटर पे गई। सबसे पहले इसको करेंगे, हम भेजेंगे फ्लैश एडमिन में सेंड 401। हमें क्या करना था, गोल था हमारा मेनली डिलीट करना कार्लोस। ओके, 401 अनऑथराइजेशन एरर। देन एक काम करते हैं, फर्स्ट हाफ करते हैं सिलेक्ट, इफ आई चेंज एल्गोरिदम टू नन, एल्गोरिदम टू नन, सेकेंड की हमारी ये रही, थर्ड में अगर हटा दूं और सेकेंड की मैं कर दूं एडमिनिस्ट्रेटर,
एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई सेंड ओके स्टिल अनऑथराइज्ड कि एडमिनिस्ट्रेटर का और मैं एक एफ डन करके अप्लाई करूँ एंड देन सेंड करो कि स्टिल कि मैं कंट्रोल जी 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 सेंड स्टिल जी जी नाउ हाँ ओके हमारा एल्गोरिथम आगे दिखाया सेकेंड हाफ सिलेक्ट करते हैं विनियर टू एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर सेंड admin interface only available if logged in as administrator apply send still unauthorized ओके और क्या कर सकते हैं हम ऊपर देख लेते हैं अटैक्स सिनेरियो 1 ओके यहाँ पे चलते हैं कोड फिगर एक्सपीरियंस सब पेड एंड एल्गोरिदम ओके यहाँ पे चलते हैं accepting token with no signature algorithm parameter tells which algorithm was used to sign. This was inherently flawed because server is an option but implicit trust user controlled input. In other words, user can be signed with different but can also be left unsigned. In this case, the algorithm is set to run, which indicate unsecured JWT. Let's change it to none. Apply. Send. Still 401. Okay. Send. इसको काम करो हटाओ प्रोक्सी पे जाओ आईडी विनियर दोबारा भेजो एडमिन नन अप्लाई एंड इसको करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर सेंड 200 ओके तो मैंने बेसिकली सिग्नेचर हटा दिया पर डॉट रहने दिया तो उसके वजह से वो काम करेगा काम करा है स्लैश एडमिन के बाद डिलीट कर लेते हैं यूजर again slash delete user carlos 10 302 not found
और लैब सॉल्व हो जानी चाहिए। जहाँ ओके, लैब सॉल्व हो गई है। ओके, अब देखते हैं ब्रूट फोर्सिंग सीक्रेट कीज। एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसको JWT पे भेजते हैं। एक्सप्लॉइटिंग फ्लॉट JWT वेरिफिकेशन। प्लस पेस्ट। कॉपी एंड कॉपी पेस्ट। ये भी हो गया। ब्रूट फोर्सिंग सीक्रेट कीज प्लस brute forcing secret keys. Some signing algorithms such as HS256 use an arbitrary standalone string as the secret key, just like a password. It's crucial that this secret can be easily guessed or brute forced by an attacker. Otherwise, they may be able to create JWTs with any header or payload values they like. Then users sign to resign the token with a valid signature. When implementing JWT application, developers sometimes make mistake like forgetting to change default placeholder secrets. They may even copy and paste code snippets they find online, then forget to change a hard-coded secret that's provided as an example. In this case, it can be trivial for an attacker to brute force a server's secret key using brute forcing secret key using hashcat. We recommend using hashcat to brute force secret key. You can install hashcat manually, but it also come pre-installed in Kali Linux. You may need to you may need a valid signed JWT from the target server and word list of well-known secrets, and you can run the following command. Copy and paste. We have weak signing key. CD sudo CD slash user shared word lists. Kali. My mistake. Sudo wget ls ls grep jwt। ओके, आ चुका है। क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं लैब। JWT
JWT में इसका साइनिंग टोकन ही आएगा आई थिंक लास्ट का। माय अकाउंट पे मैं लॉगिन पहले से हूँ। ओके मैं विनय एंड पासवर्ड इज की आई नॉट नाउ proxy proxy control delete clear yes reload and disable ये रहा आईडी रिपीटर ये रहा सीक्रेट sudo hash get hyphen a hyphen a 0 hyphen m 16500 JWT and word list is JWT no hash loaded ओके एक बार इसको हटा के देख लेते हैं अनमैच्ड फिर एक काम करते हैं पूरा ले लेते हैं एक बार शिफ्ट भी एंटर ओके आई डोंट थिंक कुछ पॉइंट हुआ है सो क्या आएगा इसके अंदर JWS token of the sum of the JWS token header payload signature to brute force JWT token. What do I need? Header payload and signature. फिर ना मेरे को लगता है सिग्नेचर ही होना चाहिए यार सिग्नेचर कॉपी करता हूँ एंड हैशटैग पे चलते हैं
JWT payload, signature, payload, header. जीपीटी बेकार हो गया man. Secret key, copy JWT and force look for JWT. ओके मेरे अटक चुका है. Bro, I said fucking okay, bro. ओके हो गया ठीक. ना ये मेरा अटक गया मशीन. ओके. Yep, I can't fucking access this now. Reloading करनी पड़ेगी. और एक बार स्टार्ट तो ये प्रोक्सी पे चलते हैं स्टेडी हिस्ट्री. यहाँ चलते हैं ऑल लैब्स पर. JWT you know एक्सेस करते हैं लैब.
need a valid signed JWT from the target server. सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं विनियर लॉगिन हो गया रिपीटर पूरा JWT ले लेते हैं कैश यूजर फिगर वर्ड लिस्ट हैश कैट एग्जॉस्टेड हैश टारगेट टाइम गेसेस speed recovery project agent restored hash cat signs the header and payload from the JWT keys using each secret word list, then compares the business server if any but more than once. Hash cat hyphen show. And just watch a fucking video. Community solutions. Attacker who would like to perform an secret key, the current secret key. In this webtoken.io site, where is an editor online, we need to add the secret hash key to find out straight up. As you can see, in this case, it is JSON web token. So while you run the command, there will be an output of what is very quick, because in this case it's a straight method. So as you can see, this is the output where we will find the secret key, secret one, and if we place it into the verified signature and we copy this तो मेरा क्यों नहीं शो कर रहा मैंने भी तो सेव करा है ये रहा पूरा पेलोड डाला one unique sword
And if we place it, this is a straight method, it will be perfect. I put my home path Hashcat hyphen zero hyphen a zero hyphen n. Hashcat hyphen a zero hyphen m 16500. Then our full token. Control G. Control Shift token. Shift copy. Control Alt hyphen m 16500. Then our hash JWT token, which is obviously normally paste है. Then our full list, which is user, then share and word list, j dot list, enter. ओके हो रहा है. ओके, इसको ढूंढ लेते हैं. ऊपर स्टार्टिंग गिविंग 0 digit 1 0 0 1. ओके, फिर कुछ नहीं आया है. आई डोंट नो मैन. आना तो चाहिए था. to get the file that I previously downloaded. यहाँ पे कुछ करा गया है क्या? Use from JSON your token without, so you try to access and the verify signature. सब एडमिनिस्ट्रेटर. We change the sub in administrator, and as you can see, we have the last section where we need to add the secret key. To find this secret key, we use Hashcat, which is a very powerful program, very old, but very famous, and used internally. You will कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर करके देख लेते हैं. फर्स्ट सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई चेंजेस कॉपी करते हैं, सेव करते हैं बस. राइट एंटर. फिर कुछ नहीं आया. आई थिंक ये सही दिक्कत है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ. एनीवे, अगला चलते हैं. JWT header parameter injection. According to JWS specification, only the algorithm header permanent parameter is mandatory in practice. However, JWT headers, also known as JOS headers, often contain several other parameters. The following ones are of particular interest to attacker: JWK, JKU, KID. As you can see, these are user controllable parameter. Each tell the recipient
Server which key to use when verifying the signature. In this section, you will learn how to exploit these to inject modified JWT sign using your own arbitrary key rather than servers. Injecting self-signed JWTs via JWK parameter. The JSON Web Signature specification describes an optional JWK parameter which serve can use to embed their public key directly within the token itself in JWK format. You can see example of this get type JWK public and private key. In case you are not familiar with term public and private, we have covered of this in our materials of algorithm confusion attacks. Ideally, server should only use a limited whitelist of public keys to verify JWT signature. However, misconfigured some servers sometimes use any key that's embedded in JWK parameter. You can exploit this behavior by assigning a modified JWT using your own RSA private key, then embedding the matching public key into JWK header. In the JWK header, although you can manually add or modify JWK parameter in both the JWT editor extension provides useful feature to help you test for this vulnerability. With the extension loaded, इसको खोल लेते हैं, इसको बंद करते हैं एंड क्रॉस प्रॉक्सी clear history, access, my account, Vinia, PETER, proxy, work suite, login, disable, with the extension loading verb में tab bar go to JWT editor keys tab, एक बार इसको रिपीटर में भेज देते हैं, JWT editor, new RSA key, generate a new RSA key, JWK key size ID, send a request containing JWT to workspace. In the message header switch, the extension generated tab and modify the tokens payload however you like. Repeater, cookies, repeater पे चलते हैं, kid, send request containing JWT to workspace repeater. Copy as JWK. Kid, JWK, kid, click attack.
Click on the button for the type of key that you want to add. Generate a key alternative paste existing key. Edit the key as required and save OK. In the JWT editor की टैब में चले गए, न्यू RSA की जनरेट कर ली. Send a request containing a JWT to work repeater. The message editor. Switch the extension generated. Click attack that select environment when prompted and tell your newly generate. Then request press on server respond. You can also perform attack manually by adding JWK header yourself. Opens config. Message editor. Green, yellow. Payload header. Generating RSA key. Send request containing JWT to work repeater. इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी. Solutions video. In this video, we're going to take a look at the fourth JWT lab from Portswigger's Web Security Academy. The lab is called JWT Authentication Bypass via JWK Header Injection. Based mechanism of handling. Let's go. We need to modify this username from Wiener to administrator so that we can go and delete the Carlos user. Obviously, if we do parameter. So let's go over to our HS256 and this is RS256, so RSA. And then, as usual, we need to modify this username from Wiener to administrator so that we can go and delete the Carlos user. Obviously, if we do that, the problem is the signature isn't going to match, which is why we need to have a look at this JWK parameter. So let's go over to our demo. So give us a private example commands, or just use the help menu if TLDR isn't giving you great options. Oh, this gives you subcommands. Okay, so you can my account from when we were Wiener, which is right here. So I'm going to take this request and send it to the repeater. Let me maximize this as well. So I'm not sure if you saw the last video, but in the last one, we were able to use this JSON. मेरे पे क्यों नहीं दिखा रहा? लोल.
अच्छा ये रहा जेसन वेब टोकन। ओके 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 ओके। सबसे पहले ऑब्वियसली इसको एडमिन और एसटीआर यूआर करके एडमिन, इसको एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं एंड किड ये रहा। इस किड को कॉपी करते हैं और JWT में चलते हैं। फीस न्यू RSA की आईडी मेरी, फिर एक मिनट इसको क्रॉस रखते हैं। रिपीटर इस किड को हमें चेंज करना है into a new RSA की, कॉपी JWT, रिपीटर पे इसको पेस्ट करते हैं। ये करना है कि JSON Web Tokens extension, but the JSON Web Token extension didn't work. So there's but the two different JSON ones parent here. box, so there is no And in different this one, one we're here. actually going to see the reverse. So if we look at the JSON Web Tokens, which did work for the previous one, there's actually no option here. We've got the non-attacks and we can load a secret and a key from a file, but there's nothing to actually spoof the JWK. Whereas if we go to this JSON Web Token and go down to attack, you'll see embedded JWK is one of the attacks. So that's great. If we now change this username to administrator, can we click an attack and then embedded JWK? But we can't because we don't have any signing keys. attack. Okay, verified. ओके ऑब्वियसली प्रीटी बेस को मेरे को चेंज करना पड़ेगा टू एडमिन। सेंड ओके स्ट्रेटर की जगह स्ट्रेटर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई सेंड। So last time, you might remember, I couldn't get the attack working with this extension because I couldn't find the right way to add a secret here. It was by brute forcing the secret that we got the last challenge. This time, we can go to new RSA, we can just generate a key, and that should be it. Let's just go back to repeater and attack, and then embedded JWK, okay, send. We scroll down and we're the administrator again. So really nice, quick and easy one. I really liked how that extension dealt with this attack. ओके लेट मी सी अगेन, इसको क्लोज करते एंड रिपीटर पे चलते हैं। सेंड दिस टू रिपीटर, सेंड 200 ओके। JWT premier obviously admin, maybe MIN, दो बार एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एंड अटैक में हम ओके सेंड what the hell, send
JWT code figure administrator. Verify. Send. The final one of the attacks. So that's great. If we now change this username to administrator, can we click on attack and then embedded JWK? Once web tokens extension, take this request and send it to the repeater. Let me maximize this as well. So I'm not sure if you saw the last video, but in the last one, we were able to use this JSON Web Tokens extension, but the JSON Web Token extension didn't work. So there's two different ones here. And in this one, we're actually going to see the reverse. So if we look at the JSON Web Tokens, which did work for the previous one, there's actually no option here. We've got the non-attacks, and we can load a secret and a key from a file, but there's nothing to actually spoof the JWK. Whereas if we go to this JSON Web Token and go down to attack, you'll see embedded JWK is one of the attacks. So that's great. If we now change this username to administrator, can we click on attack and then embedded JWK? But we can't because we don't have any signing keys. So last time, you might remember, I couldn't get the attack working with this extension because I couldn't find the right way to add a secret here. It was by brute forcing the secret that we got the last challenge. This time, we can go to new RSA, we can just generate a key, and that should be it. JWT editor. Delete. New RSA. Generate. Okay. Repeater. Administrator. Attack. You. Okay. Then still unauthorized. And into the JSON Web Token and access in a Carlos that we will find through. As you can see, trigger try to perform in order to we will save it a text file. And so in this case, we just need to copy it and perform the action as follow. So we need to generate a new RSA key. For the size is not a problem, we can choose whichever we want, but because this will be updated once it will be signed with the JSON Web Token. So let's try to access the admin panel. As you can see, we are having the current cookie session. We use the previous one, and once we place it, we You can see. use the previous one, and once we place it, we attacked with the embedded JSON web key. This will allow us to choose the previous key that we generated, and as you can see, in this case, we are able to What?
Hello, we will solve the next lab of the JSON Web Tokens attacks topic from the Web Security Academy. Peter, JWTs. Okay, we need the GET request to the endpoint my account, send this request to burp repeater and switch to burp repeater. Here go to the request line and change the my account to admin and send the request. In the response section you see we received an HTTP 401 unauthorized and click the new RSA button. Now click the generate button, leave everything as it is, generate, and click OK. The key size doesn't matter because it will be updated later automatically. Click OK, and here is our new generated SR key. Okay, go back to burp repeater and here click the subtab JSON Web Token. So, okay. Now go to the payload section, or of course resize the request section until you see the three buttons. Go to the payload section and replace the value of the property sub to administrator because we need that user to access the admin panel. And now click the attack button. Here select the option embedded JWK, and here we have to select our new generated ASR key. Click OK. And now if you look to your header, you see there are some new entries. Here's the JWK property, and this containing our new public key. Okay, go to the subtab raw because it looks better and send the request. And in the response section you see we received an HTTP 200 OK. That means we can let me try. मैं इसको हटा दूं दोबारा करने के लिए दोबारा हटा दूं एंड यहाँ पे चलते हैं नोट्स नोट्स मेरा हिस्ट्री अब रिपीटर पर देखते हैं ऑब्वियसली support करने बैठने send में unauthorized error and web token. Obviously let's change it to administrator attack. Okay, okay, 200 send, and that's all.